Hello guys, welcome back to another video of React Native tutorials एंड पिछली वीडियो में हमने बात किया था जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट को जस्ट इन टाइम लैंग्वेज भी बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट में फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप की कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स हमारे जावास्क्रिप्ट में होते हैं। बेसिकली उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देयर आर मेजरली टू टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। फर्स्ट वन इज स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज where each variable and expression type is already known at compiler to at a time of compilation. Once a variable is declared to be a certain data type, it can not hold the another value. Hmm. तो अकॉर्डिंग टू दिस अपने पास दो टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं। एक टाइप होता है जिसमें से स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज, जैसे कि आपकी सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, जिसमें हमारा प्रोग्राम पहले कंपाइल होता है और उसके बाद एग्जीक्यूट होता है। बट जावास्क्रिप्ट जस्ट इन टाइम लैंग्वेज है, इसमें कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन एक ही टाइम पे होता है। सो अगर हम इनकी बात करें तो इनमें हम जो डेटा टाइप पहले डालते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम, वही डेटा टाइप प्रोवाइड रहते हैं जब तक कि हमारा प्रोग्राम कंपाइल ना हो जाए। कंपाइल होने पे हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं बट उसके डेटा टाइप को नहीं चेंज कर सकते। सो राइट क्लिक करेंगे ब्राउज़र पे एंड इंस्पेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट है कंसोल खोलने के लिए। सो जब हम अगर बात करते हैं सी, सी प्लस प्लस और जावा जो कि स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज हैं, उसमें वेरिएबल को डिफाइन करने का तरीका होता है कुछ ऐसे। सो वी हैव टू गिव द टाइप and the name and the value for this variable. So it will also contain the integer type of value. It will not contain like this abc. For this we have to make this variable as string type. But the other language that we have is dynamically typed language that receive different data over the time. ओके, सो इसके एग्जांपल हमारे पास रूबी, पाइथन और जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल अगर हमें जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो वी हैव टू क्रिएट लाइक दिस। सो इट कैन स्टोर एज it can store the value of x as an integer, and if we have to do like this, now this will store the value of x as a string. So JavaScript is dynamically typed, also called loosely typed scripting language. That is, in JavaScript variable can receive different type of data type over the time. So the latest version of JavaScript ES6, we can say that, has defined seven type of data type, in which six types are primitive, that is predefined. सो आपके जो छह टाइप के डेटा टाइप हैं वो हैं नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड एंड ऑब्जेक्ट।
सो ये जो आपके 6 डेटा टाइप हैं ये प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं. So in number we have to store values like 5, 6, 7. In string we have to store string values like A, B, C. And in boolean is basically represent as a logical entity and can have two values, true and false, at that time. So for boolean there are two values, true or false. Then the next type is null. This type has only one value and that is also null. Undefined, a variable that has not been assigned a value, that is undefined. So we can check out this example after 5 minutes. Then the object. So it is the most important data type and forms the building block for modern JavaScript. Basically, object is just like JSON object in which have key and value pairs like this. So this is the object type. So these are some basic information about the loosely typed language and strictly typed language. So when we come to our topic, the variables in JavaScript. So variable in JavaScript are containers which can hold some values that is reusable. It is the basic unit of storage in program. So the value stored in variable can be changed during the execution. So if we have assigned the value of x equal to 5 and if we have print 5, if we print x, that will return 5. If we give the value of 6, then it will return the 6. So it will basically change the values of variable over the time in during the program execution. A variable is only a name given to a memory location. All the operation done on the variable affected memory location. So if we have to make this variable uh, where x is equal to 5, so we have to allot some space in memory with the name of x. So all basically x is a reference type of that memory. So all the operation that will be performed in our program basically perform on that memory which can be referred by this variable. So in JavaScript we can create a variable like this where where then variable name and then value of that variable. So if you don't want to this value, it can be quite simple as this, because values can be everything. So first, where is the keyword? So for defining a variable there is a keyword as where, and there are also more keywords for defining a variable like constant, let. So these are the keywords, and this variable name is known as the identifier. Identifier is basically a unique name on which we have to
represent the name of the variable. So for making this identifier, we have some rules. So if we have to see these rules, the variable name is the name of variable which should be defined by the user and should be unique. Uh, these type of these type of name are known as identifier. So अगर हम identifier का name कुछ भी दे रहे हैं, that is a predefined word like for. So for is a looping word. So if we hit this, it will give you an error, and if we get this, it is fine. So we can't give the identifier name as a keyword. Where is also keyword. So if we give where and where, so it will also give error. And the first character should be a letter or an underscore. So if we provide our identifier name as like this, then it will give an error. And if we provide like this will be fine, because the first letter of the identifier is a letter or underscore. And if we provide like this is also fine, because underscores are allowed as a first letter of identifier. So these are the basic informations about the variables and data types in JavaScript. If you like this video, then hit the like button, share, comment and subscribe my channel. Thank you guys. Thanks for watching.